Dear students, this is your second class of information technology. Our second रे जहाँ जहाँ chapters थिला, in the first class I have told you about that. our first chapter जो networking थिला, networking रो our mainly चारटा class रहो. First class रो we have discussed about what is networking and what are its advantages. Now we have just discussed about what are the different types of networking devices सब कौन काम रहुची. ए क्लास में डिस्कशन करवा ट्रांसमिशन मोड क्या कह जाए ता सहित आमर नेटवर्क रे कंप्यूटर केमिति कनेक्शन हो पारे दैट इज टोपोलॉजी. सो विल डिस्कस अबाउट टू थिंग्स इन दिस क्लास. आम दी टाइम्स डिस्कशन करवा गोटे हूँ ट्रांसमिशन मोड आउ गोटे हूँ नेटवर्किंग टोपोलॉजी. सो विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज टोपोलॉजी. टोपोलॉजी क्या कह जाए. So what is topology? Topology means the way the computers or the devices are connected in a network. Means how the computers are physically connected in network. जैसे आमे क्लासरूम रे बसुचु, क्लासरूम आमे रो वाइज बस परिवा, कॉलम वाइज बस परिवा, आम गोटे प्रेयर कला बेले गोटे धाड़ी अनुसार ठिया होचे. सो आमे गोटे कंप्यूटर केमिति कनेक्शन करि परिबा, आइदर सर्कुलर मैनर कनेक्शन करिबी बा स्ट्रेट पाथ रे कनेक्शन करिबी बा जिगजैग मैनर कनेक्शन करिबी. सो डिफरेंट वे रे मुता कनेक्शन करि परिबी. सो एटा कहउची हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन नेटवर्क, ताको कहा जाय टोपोलॉजी. सो टोपोलॉजी रिफर्स टू द कनेक्शन or the physical layout of the connection of the computers in a network. So what is topology? Topology refers to the physical layout of computers or devices connected in a network. That means how they are connected, how these devices are connected. केमिति कनेक्टेड होइछंती, that is known as topology. So there are different types of topologies. We'll discuss one by one. Actual topology also decides how the data transfer rate will vary. Data transfer rate केंदी vary करिवो बा तमर स्पीड केंदी vary करिवो सेटा डिसाइड करछ टोपोलॉजी. So we'll discuss one by one. There are different types of topologies, types of topology. टोपोलॉजी कितने प्रकार अच्छी. फर्स्ट हला पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी. सेकेंड हला स्टार टोपोलॉजी. थर्ड रिंग टोपोलॉजी. Fourth one, boss topology. Fifth one, tree topology. And the last one is, sixth one is mesh topology. And last है hybrid topology. ये जो सात प्रकार टोपोलॉजी रहिला, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बॉस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी. ये सात प्रकार टोपोलॉजी रु सबुठ इंपोर्टेंट होची ये चारोटी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बॉस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी. आमर सीएचएस कोर्स रे आमर ये चारटा मोस्ट इंपोर्टेंट रोची. आमे ये चारटा बेस डिटेल पढ़िबा बुझी होची. सो विल डिस्कस वन बाय वन. पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का कह जाए, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी. टोपोलॉजी माने कौन कहल, टोपोलॉजी मीन्स द लेआउट ऑफ द कंप्यूटर्स केमिति कनेक्शन होता है. या पई आमको चारोटी बेसिक पॉइंट मन रखिया पड़ियो. व्हाट आर दे? The first point is how the devices are connected. Second point होउची
how many wires are used? Third point is the setting. Setting is difficult or easier? डिफिकल्ट हम ना इजियर हम माने गोटे डिवाइस को ऐड करिया सहज हम ना ऐड करिया सहज हम रिमूव कला सहज हम रिमूव कला सहज हमनी सेटा भी हम देखिबा आ गोटे पॉइंट होची इफ ए डिवाइस इज रिमूव्ड is there an effect on the network? गोटे कंप्यूटर नेटवर्क 10टा कंप्यूटर कनेक्शन होकर जदि गोटे कंप्यूटर काढ़ी दौची कौ प्रकार टोपोलॉजी यूज कर काढ़ी दौची ताहले नेटवर्क उपर ता प्रभावटा पड़ुची ना नहीं सो बेसिकली आम इजिली 4टा पॉइंट सबुथ मन रखी पारे ता छड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट सब अच्छे मुझे कहबी किंतु बेसिकली 4टा पॉइंट मन रखिया गोटे हाउ द डिवाइस आर कनेक्टेड केमिति कनेक्शन होता कंप्यूटर गुड़िक सेकेंड है हाउ मेनी वायर्स आर यूज केतोटी तार बा केतोटी केबल दरकार अछि कनेक्शन पई थर्ड होची सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर मींस द adding and removal of a device is easier or not or difficult. तापरटा होची if a device is removed जदि device remove करछि is there an effect on the network किसी इफेक्ट पड़ुछि ना नहीं so we'll discuss one by one. First topology la point to point topology. पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन सब सिंपल कारण ए केवल दुईटी ही कंप्यूटर कनेक्शन होता इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजीज आमर जो 7 प्रकार टोपोलॉजी कहली 7 प्रकार सबुठ सहज बा सबुठ सुविधा होची आमर पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी ओनली 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड ओनली 2 डिवाइसेस or 2 computers are connected. So this is the most simplest one in which only 2 computers are only connected and the configuration is very much easier. जदि मु गोटे कंप्यूटर काढी दउछ एठी को हबो ताले अलगा गोटे कंप्यूटर डाटा आसी परिबो नाही so we cannot remove one computer from the network हम एठी रिमूव करि परिबा नाही जो रिमूव करि द ताले नेटवर्क इनकम्प्लीट हे जिवो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन आ गोटे कहली एठी तार एफिशिएंसी बहुत भलो जेहेतु ओनली 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड नो इंटरमीडिएट मीडियम इज देयर सो द एफिशिएंसी is better than other type of topologies. और आउट पॉइंट मक द एफिशिएंसी is better and data transmission is faster. So we have to remember these 3 points. One is it is one of the most simplest topologies. Eta thara council short question astila what is the most simplest topologies of all topologies. So the answer is point to point topology. The second one is only 2 devices can be connected. There is a direct connection between the 2 devices. And the third one is it is very much it has a better efficiency and it is speed. The speed ta bahut adhika rahe because only 2 computers are connected. Next we'll go for another topology that is star topology. एक्चुअली टोपोलॉजी मन रखिया वाले तमे जदि डायग्राम मन रखि द टोपोलॉजी प्राय सब पॉइंट मन रखियो सो रिमेंबर द डायग्राम्स मु जो डायग्राम कर से डायग्राम वी हैव टू रिमेंबर दोस डायग्राम्स डायग्राम मन रखले हमें टोपोलॉजी मन रखिया बहुत इजी रही जो 5-6 पॉइंट अच्छी से डायग्राम हमें मन रखी निजे लिखि दे पारिबा सो ट्राई टू विजुअलाइज द डायग्राम्स डायग्राम कले तो विजुअलाइज करो डायग्राम देखि तुमे निजर पॉइंटडा बाहर कर दे पारिबो स्टार टोपोलॉजी
So we'll first discuss about star topology. Star topology रे all the devices बा जहाँ भी device रोची, those devices are connected to a central hub. Hub का क्या जाए? Hub is a device which is used for data transmission between the two devices in the network. If one device जदि ए कंप्यूटर किसी डाटा प्रदान करिया चाहूची ताले से डाटा प्रथम आसीबो हब पाखु हब डिसाइड करियो काहो दबो ना नहीं तापर हब जहाँ दरकार थे ताको से डाटाटा दबो सो हब डिसाइड्स द डाटा ट्रांसमिशन रूट्स को पर डाटा ट्रांसमिशन हे पारियो से डिसाइड करी डाटा ट्रांसमिशन करियो सो मु कहितले एटी 4-5 पॉइंट जो इजीली मन रखिया पई फर्स्ट पॉइंट कोन कहितले हाउ मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड केतरा वेयर भी दरकार होची फर्स्ट पॉइंट आला हाउ दे आर कनेक्टेड फर्स्ट पॉइंट इज हाउ दे आर कनेक्टेड मींस the computers are connected to a central hub. First point is the computers are connected to a central hub. Diagram मन रखले हमें 100 पॉइंट मन रखि दे परिबो. Second point होची if one device data transmission केमती होची if one device need to send data to another device जदि गोटे डिवाइस आउ डिवाइस को डाटा दबाउ चाहूची ताले से डाटा हब थ्रू रे आसीबो. So if one device want to send or need to send or transmit data to another device then the same is routed through the hub. हब थ्रू रे राउट होके आसीबो सेटा एठी चारटा कंप्यूटर अछि चारटा कंप्यूटर कनेक्शन में चारटा तार दरकार होछि सो कनेक्टिंग n नंबर ऑफ डिवाइसेस वी रिक्वायर n नंबर ऑफ वायर्स वन ऑफ द कंप्यूटर में वर्क एज ए सर्वर गोटे कंप्यूटर सर्वर टाइप रो भी हमरो काम कर पारे जोटा हमें फ्रॉम व्हिच ऑल द कंप्यूटर्स में एक्सेस डाटा नेक्स्ट वन इज इफ वन डिवाइस फेल्स जदि ए डिवाइसटा फेल हो जाउछि काम करूनी ताले कह हबो किसी इफेक्ट पड़ोनी नेटवर्क ऊपर किसी इफेक्ट पड़ोनी कारण ये कम करनी किंतु ये आपको दे पारिबो ये आपको दे पारिबो सो समस्ते समस्त डाटा आदान प्रदान कर पारे द इफ वन डिवाइस फेल्स देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द नेटवर्क आउट पॉइंट जदि कि सेंट्रल हब टा फेल हो जाए जदि मझी कंप्यूटर टा फेल हो जाए सेंट्रल हब जहाँ थ्रू डाटा ट्रांसमिशन होची जे सेटा फेल हो जाए ताले कोन हबो हमर डाटा ट्रांसमिशन हे पारिबो नाही. नेक्स्ट वन इज हमर कहितली कॉन्फ़िगरेशन बा सेटिंग टा एठी इजियर ना डिफिकल्ट रोज सेटा देखियो सो आमे जेहेतु गोटे तार ही कनेक्शन हो जिसो सेटिंग इज मच मोर इजियर द सेटिंग इज इजियर कारण मु चाहिले ए तारटा काट देला माने ए कंप्यूटरटा बाहर कर दे परिबी जदि ए कंप्यूटर लगिया चाहूँ गोटे तार जस्ट कनेक्शन कर दे परिबी किंतु मु कहितली टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द नेटवर्क यू नीड एन डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस दैट इज नोन एज NIC तो कि NIC बोली कहा जाए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रथमे कार्ड टाक इंस्टॉल करिया पड़े कंप्यूटर CPU रो मदरबोर्ड रे NIC कार्ड इंस्टॉल कला परे आमे ताको नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करके सेटिंग कर परिबा और नेटवर्क से कंप्यूटर कनेक्शन हेई पारिबो सो वी हैव टू फर्स्ट इंस्टॉल द NIC कार्ड इन द मदरबोर्ड देन वी कैन कनेक्ट सो ए सब कंप्यूटर हमर NIC कार्ड इंस्टॉल हेई थिबो सेत में सेटा कनेक्शन हेई पड़ची हब सहित बा नेटवर्क सहित कनेक्शन हेई पड़ची सो एबे आमे देखिले कोन कोन पॉइंट अछि ताको आमे देखिबा को टाइप लिखि परिबा एबे So first point is all devices are connected to a central hub or the connector will कहा जाए. Second one is if one device need to send information to another device जदि गोटे डिवाइस आउट डिवाइस को डाटा दबाउ चाहूची ताल से डाटाटा हब थ्रू रे आसीबो if one device need to send data or information to other devices then it is routed through the hub. Third point, one of the computer may act as a server. One of the computer may act as a server. That means it can provide services to other devices in the network. Next one is for connection of n number of devices. It is 1, 2, 3, 4, 5. 5 devices are there connected to the central hub. So 5 number of wires are there.
required. So for connection of n number of devices, there is requirement of or there is need of n number of wires. Next कहते it is easy to add and remove a device in the network. That means the configuration process or the setting process is easier. So it is easy to add or remove a device from the network. Next point, जदि device fail if one device fails, this device fails, then only this device will fail. Data याकू transmit हो पारिबो किंतु अलगा सब network काम करिवो. So if one device fails, then network remains intact. मान नेटवर्क का किसी इफेक्ट पड़िबो नहीं. But जदि सेंट्रल हब टा फेल हो, if the central hub fails, कारण सबू डाटा ट्रांसमिशन हब थ्रू रे हो, but if central hub fails, then total network goes down or fails. Total network fail हो. So देखो एठी हमें जदि मु कहली डायग्राम मन रखिया सब पॉइंट मन रखिया. डायग्राम रे कहली all the devices connected central hub, first point. Second point is if one device need to send information to another device, then it is routed through the hub. Third one is for connection of n number of devices, we require n number of wires. If one of the computer may act as a server, because our server is not compulsory. Server may be there, may not be there, but if one of the computer may act as a server which may provide services to other computers in the network. So for if it is easy to add and remove a device, that means the configuration process is much more easier. And the last one is if one device fails, then there will be no effect on the network, but if the central hub fails, then the network goes down or the network fails. So this is all about the star topology. This is one of the most important long questions for your council, because in 2009 and 2010, 2010 and 11, this long question, 2019 and 20, this long question is already there. Okay. Next we'll go for ring topology. Ring is also in a circular manner, so the topology is also in a circular manner. I will draw the diagram here. So this is ring topology. मु कहतली जे आमे डायग्राम मन रखी सेतरु 4-5 पॉइंट सबले मन रख दे परिबा. Ring topology देखो, all the computers are connected. Diagram मन रखिबा. All the computers are connected in a circular manner. एठी गोटे कंप्यूटर केटा कंप्यूटर से कनेक्शन हेची. One computer is connected to other two computers in its either side. One computer is connected to two other computers on its either side. For connection of n number of devices, there is requirement of n number of wires, because there are 4 number of computers are there. So 4 number of wires are also required. If at your point the data transmission is unidirectional. In one direction the data is transmitted, and if one device fails, for example, if in one direction data travels, that means if this device, जब ए device टी याकू data दबाकू चाहूँची, ताले केमिति से डाटा दबो. प्रथम से डाटा आसीबो कोठी की या पाखु ता नाइबर डिवाइस को, तापर सेटू डाटा आसीबो या पाखु. मींस इफ वन डिवाइस नीड टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर डिवाइस, देन इट इज राउटेड थ्रू द नाइबरहुड डिवाइसेस टू रीच द डेस्टिनेशन.
जदि आहुरी दूर अच्छी आउटे टाइम लगे सो इट इज मच मोर टाइम कंज्यूमिंग जदि नेटवर्क देयर आर 100 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड इफ वन कंप्यूटर नीड टू सेंड इन्फॉर्मेशन to the 100 if the first computer need to send information to the 100th computer then the data is routed through 99 devices to reach the destination एक नंबर कंप्यूटर टी 100 नंबर कंप्यूटर डाटा दबो ताहले 98टा कंप्यूटर पास करी गला परे जाई पहुंचबो 100 नंबर कंप्यूटर सो इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस if one device fails for example this device will fail same point this device will fail जदि ए डिवाइस टी फेल हे जो ताले कोन हबो ताले ए डिवाइस टी फेल हो माने डाटा एठी बंद हेगला या पर आउ जीव नाही so if one device fails then the data will not travel further in the network कारण data unidirectional data transmission को एठी फेल हेगला so एठी से एड्रेस टा पाइला नाही बा एठी से नोड टा भांगी गला तेनु एठू डाटा ट्रैवल करी जाई परिबो नाही हो the adding and removal of a device we can it is much more difficult to add and remove a device because the setting is there unidirectional setting is there then adding or removal ta take difficult हुए next point हला data केमिति ताउ दबो जदि ए कंप्यूटर टा याकू डाटा दउची ताहले से प्रथम को टोकन पास करिवो ए टोकन इज पास्ड token कौन a small address of the computer what is the address of a computer the address of a computer is known as MAC media access control एड्रेस टाको मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोली कह जाए माने प्रतिटी कंप्यूटर जोड़ा नेटवर्क रे कनेक्शन हेची तार गोटे गोटे मीडिया एक्सेस कंट्रोल तार एड्रेस अच्छी एंड दिस एड्रेस इज असाइन्ड बाय द एनआईसी कार्ड द्वारा एटा असाइन करा जायछि सो व्हेन इट गोज जतले एटा ट्रैवल करी गला से एड्रेस टा मैच कला या से मैच कला नो मैच कलानी या से मैच कला जोठी से मैच करी गला ताकू से डाटा टा दे देबो सो द मैक एड्रेस इज मैच्ड ऑन ईच नोड जो सब नोड मैक एड्रेस मैच करिवो मैच कला पर जोठी से एटा मैच करी गला सेठी से डाटा ताकू देई दबो सो वी विल राइट डाउन द पॉइंट्स हियर डायग्राम देखिए सो पॉइंट मन रखा फर्स्ट पॉइंट इज all computers or all devices are connected in a circular manner. Second point, one device is connected to two computers on its either side. ये दीटा कंप्यूटर से कनेक्शन है जी ये दीटा कंप्यूटर से कनेक्शन है जी ये दीटा कंप्यूटर से कनेक्शन है जी so one device is connected to two computers or two devices on its either side. Third point, adding and removal of a device is difficult as the next point ala the data transmission is unidirectional means data flows in a single direction in the network data transmission is unidirectional that's why जेतले गोटे कंप्यूटर आउट कंप्यूटर डाटा दबो से कोन करिवो प्रथमे जो पर डायरेक्शन डाटा जाउची प्रथमे ताकू दबो से ताकू दबो से ताकू दबो एंती नाइबरहुड डिवाइस दे दे पाखो कंप्यूटर दे जोटी से एड्रेस टा मैच करिवो ताकू से दबो डाटा ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम one node to another then it matches then it is routed through the neighborhood devices
माने पाख डिवाइस सहित से जीव पाख डिवाइस दब से पाख डिवाइस को दब लास्ट को जाए पहुँच नाइबरहुड डिवाइसेस टू रिच द डेस्टिनेशन। केमिति जानिबो से कहा को दब बोली प्रतिटी कंप्यूटर रो गोटे मैक एड्रेस थाए यार गोटे मैक एड्रेस मैक 1 मैक 2 मैक 3 मैक 4 प्रतिटी कंप्यूटर गोटे मैक एड्रेस है एंड दिस मैक एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय एनआईसी कार्ड। आम जो एनआईसी कार्ड लगोचु गोटे हार्डवेयर डिवाइस लगोचु नेटवर्क रे कनेक्शन करिया पे द सीरियल नंबर और द प्रोडक्ट की नंबर ऑफ दैट एनआईसी कार्ड acts as the MAC address for that computer. So when this computer will send the data to this computer, MAC 1 will send data to MAC 4, then it will match destination address MAC 4 patala. So MAC 4 will be matched to no, MAC 4 will be matched 3 no, MAC 4 is matched with this MAC 4. So when it is matched जो match करी जीवो सही device को से data दबो बुझेला। So that is known as token. Here MAC address is matched for delivery of data to the destination device. Fifth point, if one device fails, तुम आउट पॉइंट मन रख पारो जे कनेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ डिवाइसेस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ n नंबर ऑफ वायर्स। फिफ्थ पॉइंट हला हमरो इफ वन डिवाइस फेल्स जदि ए डिवाइस फेल होउची काम करनी ताले कोन हबो या एपटू डाटा आस परिबने हो एटू गोटे संजोग विच्छिन्न टाइप हो कारण डाटा जेहेतु ये आपको दे पार कि ये आपको देला माने कंप्यूटर खराब है तेणु कंप्यूटर से खराब कंप्यूटर डाटा याड़ी आसपार ना तेणु तापर जी नेटवर्क थी कंप्यूटर से काम करिवो नाही। सो इफ वन डिवाइस फेल्स देन द नेटवर्क partially or totally fails down. The last point is adding and removal of a device is difficult. So these are the points you have to remember in ring topology. Means all the computers are connected in circular manner. One computer is connected to other two computers. For connection of n number of wires, there is requirement of n number of for connection of n number of devices, there is requirement of n number of wires. The data transmission is unidirectional. So if one computer need to send data to another computer, the data is routed through the neighborhood devices to reach the destination. If one computer fails, then the rest computers will not also work, or the network will not work, because the computer is routed through the neighborhood devices to reach the destination. And it is much more difficult to add and remove a device from the network due to the configuration or the setting process, that is unidirectional data transmission. And the last point is the MAC address is matched. जो data पठोस, the MAC address is matched at each and every point, so that the data can be transmitted to the particular destination computer. Next time पढ़िया जिबा bus topology. Bus topology रो डायग्राम प्रथम कर दोची.
So bus topology रे in bus topology all the devices are connected in a straight line. सब straight line ने connection नहीं थांदी. So in this topology all the devices are connected in a straight path. Okay. देखो this just look like about this is the engine one, these are the doors. So this is a bus like of topology, that's why it is known as bus topology. One of the computer may act as a server. एठी गोटे computer server हे पारे. So first point is the devices are connected in a straight line and only one cable is there, only one wire connects all the devices. गोटिए तार सब device को connection करूची. So one wire is used to connect all the devices in the network. So that cable is known as backbone cable. Okay. When server sends data to another computer, this server sends data to this computer, second number computer. Then the same technique, each computer has a unique address that is known as MAC address. It will match the MAC address or the node. Node से match MAC address तो से match करियो. Match कला बड़े जदि MAC address ठीक रे destination द match कला ताले से ताकू data प्रदान करिबो. Or it will transmit the data to the connected or the destination device. एट देखि पारथुओ जे लास्ट को दीटा गारा देछि जोटा टर्मिनेटर लिखा है. These are terminators. Terminator means this is the last end. Terminator, last end means this is the end of this side, this is the end of that side. When data is transmitted in the cable, it passes through the total cable. Total cable pass कर जीवो. कौन total cable pass कर जीवो? से ये सर्वर डाटा दला एको दरकार अछि यार. से प्रथमे एड्रेस टा मैच कला आसे तो मैच कलानी डेस्टिनेशन एड्रेस माने जहा को दब डेस्टिनेशन माने जहा को दब ता एड्रेस टा कोड मैच करछे. सो प्रथमे या सहित मैच कलानी या सहित मैच कला ताको दे देला पुनी आगु से जीवो से सेट रही जीवनी पुनी आगु जीवो या सहित मैच कलानी से आगु चलला लास्ट को टर्मिनेटर काम वाला से जो सिग्नल आसीबो से सिग्नल को से ऑब्जर्व कर दो. इट विल ऑब्जर्व द सिग्नल फ्रॉम द टर्मिनेटर और द टर्मिनेटर इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द सिग्नल फ्रॉम द नेटवर्क. जदि कि डाटा ट्रैवल पास करे तो उसे ऑब्जर्व कले कौन बा इट विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द नेटवर्क भीतर रिफ्लेक्ट बैक करी जाई परिबो नाही. सो विल राइट डाउन वन बाय वन गोटे पॉइंट हम मन रखिबा. द फर्स्ट पॉइंट इज all devices are connected in a straight line path. Second point, all the devices are connected to a single cable le samadhe connection hechandi. So all devices are connected through a single cable. Third one of the computer may act as a server. गोटे कंप्यूटर सर्वर टाइप रो काम कर पारे. नेक्स्ट वन, if one device or the server need to send information to another device, if one device or server sends information to another device, then it passes through the entire cable. And delivered to the device where MAC address matches. MAC address
of destination computer matches. Fifth point, a device terminator is used at both ends. Terminator is used at both ends to observe the signals. Sixth point, if one device fails, then there will be no effect on the network. Seventh one, if backbone cable fails, if backbone cable fails, total network fails or goes down. The last point is data transmission is unidirectional. One way data transmission करियो. So these are all the points. ये सब आम point केंते easily मन रखी परिवा. मुकैली in bus topology all the devices are connected in a straight line or straight path. This is the first point. प्रति device गोटिए तार connection है. All these devices are connected to a single cable or single wire. This is the second point. Jadi if one device or the server need to send information to another one, then the data is routed through the total backbone cable. Total backbone cable is route हे जिवो आउ जहाँ दरकार ताऊ से दे दबो. केम दबो? By matching the MAC address. So one of the computer may act as a server. If one device or the server sends information to another device, for example, the server want to send information to this device or to the second device. If one device need to send information to another device, then it passes through the entire cable. The data will travel through the entire cable. ताको दे साला पर भी entire cable से travel करिवो and delivered to the device where MAC address जोटी MAC address टा match करिवो. Destination MAC address या से तो जोटी जो node रे match करला ताको से दे देला. दे सारी की या पको जीवो यार मैच करिवनी छाड़ दी पड़ासियो याको जीवो मैच करिवनी छाड़ दी आसीबो टोटल केबल से पास करके जो सो डाटा इज ट्रैवल थ्रू द एंटायर केबल. नेक्स्ट ला ए डिवाइस टर्मिनेटर इज यूज्ड एट बोथ एंड्स ऑफ टू ऑब्जर्व द सिग्नल. मु कहली जेहेतु द ट्रांसमिशन और डाटा ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल ट्रैवल थ्रू द एंटायर केबल. सो फॉर एग्जांपल एठी से ट्रैवल करके एठी आसला केबल एठी हमर टर्मिनेटर আছে. टर्मिनेटर काम कोन टर्मिनेटर इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द सिग्नल. सिग्नल को ऑब्जर्व करले कोन होबो द सिग्नल विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द नेटवर्क अगेन. आउ त नेटवर्क भितर से रिफ्लेक्ट करी जिवो नाही. नेक्स्ट इज इफ वन डिवाइस फेल्स, फॉर एग्जांपल दिस डिवाइस विल फेल. जब फेल हे गेला ताले कोन होबो देन देयर विल बी नो इफेक्ट. All these are connected to the central cable. The server can send data to this, the server can send data to this, the server can send data to this. समस्त डाटा दे परिबो. किंतु जदि बैकबोन केबल टाइप फेल हे जो जहां से तो समस्त कनेक्शन अछि, if the backbone cable fails then the total network goes down or total network will fail. And the last point is data transmission is unidirectional, means the data is transmitted in a single direction, either in the one direction or in the other direction. We can easily remember all the points by just visualizing the picture or the diagram of the topology. Next is tree topology.
let us first visualize the diagram, then I will explain about all the points. So this is tree topology. Tree topology is a combination of two types of topologies. You can see here that this is what? Eta co-topology, but this is known as star topology because all the computers are connected to a central hub. So this is star topology. And all these hubs are connected directly to a single cable. This cable is known as backbone cable. As this is a backbone cable, so this is called bus topology. So this is because all devices are directly connected to a single cable. So this is known as bus topology. So tree topology is a combination of star topology and bus topology. And in this mainly it is a combination of different types of star topologies which are combined to a single bus topology. In this diagram there are three star topologies, 1, 2 and 3. These three star topologies are combined to a single bus topology. So, and this type of topology is mainly used in a large variation, means it is a variation of tree topology, it is a variation of star topology. In large networks these types of topologies are used. So there are 3 to 4 points are there. The first point is how they are connected. It is a combination of star and bus topology. Kota kasta connection thai. The star topologies are combined to form a bus topology. Number of star topologies are combined with a single bus topology. This is the total network and this is known as a sub network. Sub network बोली कहा जाए. This is a sub network part 1, sub network part 2 and sub network part 3. There are 3 sub networks which are connected to a bus topology. So if one device fails, for example this device will fail, then there will be no effect on the network पर किसी effect पड़िबो नहीं. If the hop fails, then the sub network will, जदि ये hop टा fail होची, या पर किसी effect पड़िबोनी, किंतु ये network टा fail हो. Means if one hop fails, then that sub network will fail. किंतु जदि backbone cable टा fail होची, main cable टा fail हो, ताल total network टा fail हो. So at a point मन रखे पड़ियो, if one device fails, then there will be no effect on the network. If one hop fails, then the sub network or the part of that network will fail, and if the backbone cable will fail, then the total network goes down. So say point if one device fails, no effect on network. If hop fails, sub network fails. If backbone cable fails, total network fails. So these are the points you have to remember, and this is a variation of, I would point out, this is the variation of
star topology. Okay, next we'll go for mesh topology. In mesh topology, all the computers are directly connected to each other. Means if there are 4 computers, then one computer is connected to other 3 computers. In this topology, all the computers are directly connected to each other. If there are 4 computers, one computer is directly connected to other 3 computers through the wires. This is also known as multi-point connection because there are multiple connections from one computer to another computer. There are huge number of wires are used for connection of एठी आमर 4टा कंप्यूटर पे केटा तार दरकार होची for 4 computers. How many wires are used? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number of wires. So this formula is for connecting n number of computers. There is requirement of n into n minus 1 by 2 number of wires. If there are 6 number of computers, so 6 into, is there 4 number of computers? Sorry, 4 number of computers are there. So 4 n into n minus 1 into 4 minus 1 by 2, that is 4 into 3 by 2, 6. So 6 number of wires are used. If there are 10 number of computers, 10 computers are there. So for 10 computers, 10 into 10 minus 1, 9 by 2, 45 number of wires are used. So there is a use of huge number of wires in this type of connection. So it is very much costly as compared to other type of topologies in the network. So the points are, each computer is directly connected to every other computer in the network. There is a dedicated point-to-point link between two devices. There is multi-point link as a single computer connects all other computers. There is use of huge number of wires. There is use of huge number of wires, that is for connection of n number of devices. There is requirement of NC or n into n minus 1 by 2
number of wires. Kintu the best advantage part of this topology is as each computer is directly connected to another computer, so the data transmission is very fast. This means as a single time huge volume of data can be transmitted. ए कंप्यूटर आपको दे परियो, सिमिलरली सेम टाइम रे ए कंप्यूटर आपको दे परियो, ए कंप्यूटर आपको दे परियो. जदि सिंगल केबल कनेक्शन नहीं था वन वे डायरेक्शन नहीं था रिंग टोपोलॉजी देन दे हैव टू वेट करिया पड़ता डाटा ट्रांसमिशन टाइम. बट एठी जेहेतु प्रत्येक कंप्यूटर सहित डायरेक्टली कनेक्शन होती तेणु जी जहाँ को जे टाइम चाहिए डाटा ट्रांसमिशन करें. सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ data transmission or traffic is possible at a time due to the direct dedicated point to point link. एठी जदि को डिवाइस फेल हो, if one device fails, जदि डिवाइस फेल हो ताल चलिबो किछ नहीं, there will be no effect on the network. ये तीन काम करना, ये आस डायरेक्ट कनेक्शन अच्छी, ये आस डायरेक्ट कनेक्शन, ये आस डायरेक्ट कनेक्शन. सो दे आर डायरेक्टली जेहेतु कनेक्शन अच्छे देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द नेटवर्क. इफ वन डिवाइस फेल्स then there will be no effect on the network. The addition and removal of a device is not so easier because for connection of one device into network there is requirement of huge number of wires. जेहेतु बहुत wire rate दरकार अछि, so addition and removal of a device is very much difficult. The last point is addition and removal of a device is very difficult. And the last topology is your hybrid topology. Hybrid topology is the most simple one because it is a combination of different types of topologies. For example, in this room I want to use star topology, but in another room I want to use ring topology, and the upper floor I want to use the bus topology. So in different rooms I can use different types of topologies. So if I will combine all those topologies into a single network, then that will be known as a hybrid topology. So hybrid topology is mainly a combination of different types of topologies, such as any topologies from the that we have studied till now. Hybrid topology it is a combination of more than two topologies. It is set as per the requirement of an organization the diagram डाला Just look at this diagram. Diagram देखो, this diagram consists of 4 types of topologies.
as these computers are connected in a circular manner, so this is ring topology. This is connected, all the computers are connected to a hop, so this is known as star topology. In this topology, all the computers are connected to each other, that's why it is known as mesh topology. And all these topologies are connected to a central connector or central wire, that is known as bus topology. So this type of topology is a combination of 4 types of topologies. So I can use this type of topology in one room, this type of topology in another room, and I can connect them through a common wire. So more probably in this class we have learnt about what is a topology and what are the different types of topologies, and thank you very much for the class. So